हेलो फ्रेंड्स। कैनवा का एक बहुत ज़बरदस्त फीचर आया है एआई बेस्ड, जिसके ज़रिए आप अपने पास कुछ टाइपिंग करेंगे, कुछ आप डिस्क्रिप्शन देंगे कैनवा को और वो उसके अकॉर्डिंग आपको एक इमेज क्रिएट करके देगा। इस फीचर का नाम है टेक्स्ट टू इमेज। आइए देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप कैनवा पे लॉगिन होइए। फेमस इंस्टाग्राम स्टोरी, यहाँ आप जब ऐप्स में जाएंगे तो आपको या तो ये फीचर नज़र आ रहा होगा या आपको यहाँ सर्च करना होगा। इस फीचर का नाम है टेक्स्ट टू इमेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसे यूज़ करना चाहते हैं। हमने लिखा एंड बटरफ्लाइज इन अ गार्डन। अब इसे हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में ले सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ही क्लिक कर रही हूँ, जनरेट द इमेजेस। It will take some time, but it will create you some amazing images. Let's see. You may use any of this pattern. You may set it as your background. It's beautiful, isn't it? सेकेंडली आप फॉर एग्जांपल इसको आपने चूज़ किया, इसकी आप ट्रांसपेरेंसी कम कर लीजिए थोड़ी, सेट टू बैकग्राउंड, और उसके साथ आप दूसरा इमेज इसके साथ रख के इसे थोड़ा डिफरेंट सा एक लुक देख सकते हैं। Now it is in the form of photos. ओके, अब हम इसे ड्राइंग फॉर्मेट में लेकर आते हैं। Now it is in the form of drawing. Similarly, there are more options. You can try it yourself. Let's say a 3D option. It has created some 3D effect. Painting type. These are the paintings. So you may use in very different ways. Go to the elements. Right. This one. And I can use इसे भी डिटैच कीजिए, कॉपी कीजिए, okay. In this way, you have created such a beautiful grid of flowers and butterflies and bees. Hopefully, you like this video. Don't forget to subscribe my channel. See you in the next video. Take care.